जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये 25th लेक्चर को देख रहे हैं। ठीक है, इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में हम कितने लेक्चर्स कवर कर पाते हैं। रूल्स फॉर DFDs। कल मेरा एग्ज़ाम भी है इसी बुक का और पढ़ा मुझसे जा नहीं रहा था। अजीब सी कंडीशन हुई पड़ी है, ठीक नहीं थी थोड़ी सी, तो सोचा कि इसी तरह से सबके साथ मिलकर पढ़ते हैं, चले कवर हो जाएगा। चले देखते हैं। These rules help in achieving the level of standardization. There should be no black holes, grey holes, miracles. Do not leave things unlabeled. Sorry. The DFD should not include data flows that are unassociated with the process. Next है the process covered in these diagrams is as follows. The number of hours employees have worked is recorded, and employee time record is created, stored in employee time file. Employee salary information is taken from employee master file, which is used along with time records to calculate gross pay. The leads to calculations of deductions leading to computation of net pay. Payroll slips are printed used for ये हमारे पास है। ये पेरोल स्लिप्स के जो यूज़ हैं वो क्यों होते हैं, क्या किस लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकॉर्ड पर्पस इन द एम्प्लॉय मास्टर फाइल, preparation of checks. Next, paychecks and a copy of pay slips in given to the employee. Following corrections have been made. The process of creation of employee time record has been added between employee and employee time file. Directions of processes have been corrected among employee master file and processes of gross and net pay calculation. The presentation of payroll printing process has been improved. नेक्स्ट है ये हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये इसकी एब्रीवेशन बनती है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ERD। ये अब यहाँ इसकी डेफिनेशन आ गई है। तो द एंटिटी relationship diagram ERD is a model or diagram for high level descriptions of conceptual data model
and it provides a graphical notation for representing such data models in the form of entity relationship diagrams. नेक्स्ट है ये an entity is an object that exists and distinguishable from other objects. An entity is described using a set of attributes. ये हमारे पास वैल्यू सेट्स ईच एट्रीब्यूट हैज़ अ वैल्यू सेट डोमेन डिफाइंड पैरामीटर्स और रेंज इन विच वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट में फॉल. नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट टाइप्स हैं. ठीक है, ये सिंगल या कंपोजिट, सिंगल और मल्टी वैल्यूड, ये दो हैं इसमें. और उसके बाद है नल, फिर है डिराइव्ड. ये हमारे पास है 1 2 3 4 इसकी हैं टाइप्स. ठीक है, और उससे आगे फिर इनके जो हैं पॉइंट्स आते हैं. ये सिंगल कंपोजिट है, सिंगल वैल्यू completely defined the attributes. Composite more than one values are required to explain the attribute. Next, single or multi-valued. सिंगल एज एक्सप्लेन्ड अबव मीन्स ये हम ऊपर कर चुके हैं. ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे. और नेक्स्ट है ये मल्टी वैल्यूड. देयर एन एट्रीब्यूट कैन मोर देन वन वैल्यू. नेक्स्ट है हमारे पास नल इज़ द ब्लैंक रीड एज ज़ीरो वैल्यू. ठीक है, ये यहाँ तक होगा, बस आपने इससे ज़्यादा नहीं करना. derived is information provided on the basis of a unique attribute. जस्ट इतना करना है. उसके बाद है ये रिलेशनशिप्स हैं. रिलेशनशिप इज़ एन एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़. देयर हैज़ टू बी a relationship between two entities. ये हो गया. नेक्स्ट हमारा है 26th लेक्चर आ गया. ये हो गया सिंबल्स का. ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. ये हमारे 23rd to 24th लेक्चर्स में थे जी. तो यहाँ पर हमने जस्ट ये करना है, इसकी एब्रीवेशन करनी है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये है हमारे पास OOAD. ठीक है. वाई नीड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन. देयर आर सर्टेन पॉजिटिव पॉइंट्स विच आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर रीजन्स फॉर द इंटरेस्टेड यूज़ ऑफ दिस टेक्निक. ये हमारे पास आ जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. The widespread of use of graphical user interface. अब ये देखें, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको कहते हैं GUI. encourage use of object orientation. Software can be developed on a modular basis. ये हमारे पास आ जाता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन एंड इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग. द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज़ ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसको कहते हैं GUI. encourage use of object orientation. Software can be developed on a modular basis.
ये अब इसकी जो है आगे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ईज़ियर टू मेंटेन, ईज़ियर टू अपग्रेड, ईज़ियर टू टेस्ट, ईज़ियर टू डेवलप इंक्रीमेंटली। इसके बाद है हमारे पास रीयूजेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके ऊपर मैंने किया नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी आप कर लें। ये एक्चुअली मैंने वहाँ पे किया हुआ है, और लेकिन ये है, ये मैं कर नहीं पाई हूँ, तो ये भी आप कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ जो होते हैं ना लोगों की दी हुई डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, कुछ कही हुई बातें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये हमारे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं, और हमारे जो होते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस उनमें इतने नहीं आते हैं जितने ये उनमें आती हैं हमारे एमसीक्यूज़ में। The development activity consisting of the discovery, modeling, specification and evaluation of requirements. ये किसने कहा था? डोनाल्ड फायरस्मिथ, डिक्शनरी ऑफ ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी 1995। ये हमारे पास इन ओ ए डी analysis that has been defined in a different manner. The discovery, analysis and specification of requirements in terms of objects with identity that encapsulate properties and operations, message passing, classes, inheritance, polymorphism and dynamic binding. नेक्स्ट है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। The concept of design has been defined from different present perspectives in different approaches to system development, ठीक है। तो ये याद करने वाला नहीं है, ठीक है, ये वाला है याद रखने वाला। A system design is the process of or art of defining the hardware and software architecture, components, modules, interfaces, and data for a computer system to satisfy specified requirements. नेक्स्ट है जी इन ओ ए डी analysis has been defined in a different manner according to फर्स्मिथ, ठीक है। ये इसके मुताबिक जो है उसकी डिफिनीशन है, ठीक है। तो ये है द डिज़ाइन ऑफ एन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, क्लस्टर्स, फ्रेमवर्क्स एंड देयर इंटरेक्शंस is called OOAD analysis. Next है ये an object is defined as an abstraction of something in a problem domain reflecting the capabilities of the system to keep information about it and interact with it or both. ये किसने कहा है? कोड एंड यॉर्डन 1990। नेक्स्ट है ये जी अनदर डिफिनीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, concept, abstraction or thing with crisp
boundaries and meaning of the problem at hand. Objects serve two purposes. They promote understanding of the real world and provide a practical basis of for कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेशन. ये है हमारा जी रमबॉग 8L, ये 1991. Next है ये classes. The purpose of a class is to specify a classification of objects and to specify the features that characterize the structure and behavior of those objects. Next है ये फॉलोइंग सब क्लास है. ये लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पाम टॉप. ठीक है, ये कंप्यूटर आर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर आर द डोमेन क्लास विच कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब क्लासेस. तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है. एक तो लैपटॉप होते हैं, ठीक है, दूसरे होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जिस पे मैं इस वक्त हूँ. नेक्स्ट है ये पाम टॉप, ये काफ़ी बड़े बड़े वाले कंप्यूटर्स होते हैं. नेक्स्ट है ये हमारे पास. ठीक है, अब हम जो है इसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 17 से ज़्यादा की हो गई ये वीडियो. अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.